connecting it again here. Now see, I will not be solving the question, just taking a view that if a question is inferential or if the question is literal. So now see, what is the opportunity Kevin Mothers refers to? So this is a literal question for us. So this one is a literal question because this is starts with what evidence is there that Kevin's father was interested in his own education. Now see, obviously this one is what evidence. When it's asking for what evidence, this can be literal and this can be inferential, but obviously it's good in such words, in such questions, it's good to use your own words to be on the safe side, to be on the safe side. Okay, now paragraph 2, give 2 reasons why you think Kevin's father had to try to edge closer to the mirror. Acha guys, remember for this I really need to tell you a very factual thing here. When the question is of 2 marks, तो आप और हम समझ जाएंगे ऑब्वियसली, एक अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन से 2 मार्क वाला क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा डिफिकल्ट होगा obviously. Why? Because that's a 2 mark question. He is awarding you more mark. That means he has made the question more difficult. Now when it says give 2 reasons, that means that those 2 reasons, पहली बात तो ये कि वो those 2 reasons will not be very closer to each other in the passage, थोड़ा सा दूर होंगे. Second thing is that एक रीजन इजी होगा, एक रीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा to assess, to analyze. Okay, yes, I'm adding the students here, they're a bit late. Now see, Gavin's father grappled for the towel. Why could he not see the towel? Why he couldn't see the towel? That means this is a literal question again. No problem, easy questions these are. Give 2 reasons again. A 2 mark question. 2 mark question means this will be a difficult question. 2 reasons why Kevin's father called out for the answers with great speed. Now saying this means this is an inferential question or maybe a literal. One would be literal, one would be inferential. There are 2 different parts. That means one goes for literal, one goes for inferential. For paragraph 4, we are just discussing an exemplary passage here. और इसी का हम ECR भी डिस्कस करेंगे बाद में. Paragraph 4. When the students saw Mr. Wilder approaching, they dropped their voices until he was out of earshot. Explain in your own words what the students did. अब यहाँ पर बेटे 2 बातें हैं. एक एवरेज स्टूडेंट में डिस्कस करूंगा और एक above average, more able learner. एक सिर्फ able learner ही करेगा तो उसे पता होगा when the passage, when the question says explain your own words. तो इसका मतलब बेटे ये होता है कि जो आपको यहाँ पर इन्वर्टेड्स में जो आपको लाइन दी गई है फ्रॉम द पैसेज, उस लाइन में, उस फ्रेज में कोई भी ऐसे 2 keywords होंगे that needed to be explained. So 2 keywords would be there. You have to judge what are those 2 keywords or those 2 key phrases are. वो keyword या key phrase कौन सा है? वो key phrase भी हो सकता है. Phrase means with 2 words, a term with 2 words, वो भी हो सकता है obviously. So here you have to see, for example, earshot is 1 word here, or maybe the other word could be dropped their voices, because we cannot find any other word other than this. लेकिन इसको आंसर करने में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि they just answer by placing synonyms here. स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं. they only go for synonyms, और सिर्फ synonym बेस्ड करके, यानी एयरशॉट का synonym दिया, ड्रॉप का synonym दिया और आगे बढ़ गए. नो, इन दोनों को आपने आंसर करना है. अब उसको आप चाहे वर्ड में एक्सप्लेन करें या सेंटेंस बना के एक्सप्लेन करें, यू कैन डू बोथ द थिंग्स. देयर आर 3 लाइंस गिवन. ऑब्वियसली वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक डिटेल आंसर करेंगे. अगर आपने सिर्फ 2 वर्ड्स में उनका आंसर कर दिया तो इसका मतलब ये कि आपने आंसर को ब्रीफ कर दिया जानबूझकर. डोंट डू दैट. The smarter way to play is this. Just okay, let me see if there are other students. Yes, there are other students in the waiting room. A lot of students are there in the waiting room.
सो सिर्फ सिनोनियम्स प्लेस कर देना किसी वर्ड के, दैट वुड बी काउंट एज अ लोअर अप्रोच। एक एबल लर्नर की अप्रोच है सिर्फ ओनली एक एबल लर्नर की, मार्क्स उस पर अवार्ड हो जाएंगे, लेकिन समटाइम्स द मार्क कैन नॉट बी अवार्डेड, क्योंकि वो दो वर्ड्स, ये जरूरी नहीं होता कि वो दोनों वर्ड्स कंटेक्चुअल भी हों, बिकॉज द आंसर हैज टू बी कंटेक्चुअल। अगर वो दो वर्ड्स कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं हो रहे तो दैट इज ऑफ नो यूज। अब नाउ कंटेक्चुअल यूजेज क्या है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कंटेक्चुअल यूजेज। फॉर एग्जांपल बेटे, जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, अब ये एक एबल लर्नर करेगा कि वो देखेगा एक्सप्लेन इन ओन वर्ड्स की बात हुई है यहाँ पर, तो सर ने बताया था, सर फाइज ने, कि एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स का क्वेश्चन जब भी आ जाए, एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स में हमारे पास एक सिंपल सा फ्रेज दिया हुआ होगा, उस फ्रेज में या तो दो की टर्म्स होंगे या दो की फ्रेजेस होंगे दैट वी नीड टू यूज, तो वो उनकी फ्रेजेस को निकालेगा। फॉर एग्जांपल ड्रॉप एंड एयर शॉट, उसकी सिंपल सिनोनिम करके मीनिंग करेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक मोर एबल लर्नर इसका कंटेक्स्ट भी देखेगा, ये होता है कंटेक्स्ट बेटे, दिस इज द कंटेक्स्ट। Raza, I have explained everything and now you are asking again. Okay, this is the context basically, what the students did. It means we have to base our response on what the students did, not what Mr. Waldo did there. मिस्टर वॉल्डो की बात नहीं करनी है हमने, हमने स्टूडेंट्स की बात करनी कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट होगा तो ही वुड बी जस्ट एक्सप्लेनिंग दोस टू टर्म्स बट नॉट मेंटेनिंग द कंटेक्स्ट। मेंटेनिंग द कंटेक्चुअल मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम एक्सप्लेन ऑनवर्ड से क्वेश्चन करेंगे बेटे, तो वी हैव टू गो ऑन कंटेक्चुअल मीनिंग टू, कंटेक्चुअल मीनिंग पे जाना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? और फिर जब उसका आंसर लिखो तो बेटर ये कि उसको सेंटेंस फॉर्म में करके बेस्ड करो ऑन योर पैसेज। आंसर को पैसेज पे बेस्ड करें तो आंसर वुड बी बेटर एंड यू विल बी स्कोरिंग कंप्लीट 2 मार्क्स। नो बेटे आयशा, आई कैन नॉट डू दैट, वी आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस है, वो हम कर नहीं पाएंगे बेटे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ सी, Mr. Waldo could track the books down with a dramatic explosion. Which single word used in earlier in the paragraph reinforces the idea of dramatic? Dramatic explosion. Now one word question की बात आती है, one word question की बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास क्लू ये होता है कि earlier या later in the passage, ये earlier भी हो सकता है बेटे, this can also be later in the passage, तो दोनों की मीनिंग यही होगी कि या तो पहले यूज किया गया या बाद में यूज किया गया। Reinforce means obviously यहाँ पर जो दिया गया ड्रामेटिक एक्सप्लोजन, ड्रामेटिक एक्सप्लोजन की एक हायर डिग्री यूज होगी अगर रीइंफोर्स की बात कर रहा है। अगर वो कहता है, क्योंकि कभी कभार समटाइम्स इट सेज रीइंफोर्स द आइडिया, sometimes they reinforce the idea, sometimes they say the word that continue this idea, कभी कभार टर्म कंटिन्यू भी यूज होती है फॉर एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन। so you just need to read the passage very carefully, very closely, and you have to decide yourself कि वो वर्ड कौन सा जो ये आइडिया दे रहा है आगे। simple as that. C is what do you think Mr. Waldo suggesting when you, अच्छा now C, what do you think? What do you think is a signpost? याद आ गया, हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है तो इसका मतलब ये है कि ये आंसर इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन है, एंड हियर यू नीड टू यूज योर ओन वर्ड्स, और ओन वर्ड्स का मतलब ये है कि ये इन्फ्रेंशियल का मतलब ये है कि ये आंसर आपको क्लियरली रिटन नहीं मिलेगा पैसेज में। दैट्स इट। ओके गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, if two reasons, again we have already explained that, हम इस पे बात कर चुके हैं। paragraph 6, some students giggled quietly behind the hands at Kevin's assertion. Keep in your explain your own words. We have already discussed explain your own words आ गया, इसका मतलब दो की टर्म्स होंगी। अब दो की टर्म्स, Kevin's assertion and giggled quietly behind their hands. One word from this, it may be giggled or giggled, अगर आप कहते हैं सोचते हैं तो it's okay. Quietly behind their hands cannot be the key term obviously. And how the students reacted to the situation,
This is the context of the question. Very easy. Try solving this by yourself at home. Obviously, we cannot solve here in class right now. Again, but it was too late. Why was it too late for Kevin? This is an inferential question because it's asking you to analyze. Because in the passage, if you have gone through the passage, जिन लोगों ने passage attempt किया उन्हें पता होगा बेटे के passage में इसका कोई reason नहीं लिखा हुआ. It was too late for Kevin. So you have to analyze the reason and write the answer. This is an inferential question. Yes, Fatik, you can do that. लेकिन ये बहुत अच्छा idea नहीं होगा. तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन that would not be a nice idea to do. Okay, guys, moving towards another part. Any question till here? If you have any question, you can come up with your questions first. I'll answer this, then go forward. Okay, anybody has any question about this? Daniel, this is a word meaning question. I cannot answer this here. If you have any question regarding the passage, you can ask about the technique of the passages. No, Fatik, I cannot do that because we cannot discuss the passage here. The time is very less. I have to move towards ECRs too. So very sorry for that. Yeah, we can't do that here. I'm very sorry, we cannot do it. Yes, Michelle, you can do that, obviously. असल में कृष्णा होता ये कि बेटे कोई सा भी सेंटेंस जब हम आंसर करते हैं तो हम आंसर प्रॉपर सेंटेंस में करते हैं और कोई सा भी सेंटेंस किसी ऐसे वर्ड से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए बात करते हैं. बिलाल वन वर्ड वाले में सिर्फ तुम्हें पैसेज को रीड करना पड़ेगा एंड यू हैव टू सी तो योरसेल्फ. obviously that depends on a lot of practice to find one word in the passage, but mostly students easily कर लेते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती नहीं है वन वर्ड में. Yes, any other question? I know I'm moving bit fast, guys, as compared to the last workshop, because the thing is that we only have 2 hours. In that 2 hours, we have to cover the ECRs and everything that we are listed here. We have listed here. No, Arup, I have already told you that. अरे बस गिव रीजन वाले में ये होगा कि 2 रीजंस निकालने होंगे पैसेज से. उसमें मोस्टली एक रीजन लिटरल होता है, दूसरा रीजन इन्फ्रेंशियल होता है. थोड़ा सा इन्फर करना पड़ता है, यानी एक आसान होगा, दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट होगा. दैट्स इट. लेकिन उसमें कंटेक्स्ट बहुत मैटर करता है, कंटेक्स्ट देखना पड़ता है. एवरीथिंग इन पैसेज 2 मोस्टली डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट. अगर कंटेक्स्ट तुम इजीली प्रॉपर्ली गेट कर रहे हो तो फिर सारी चीजें हो जाएंगी. अगर कंटेक्स्ट रॉन्ग होगा तो आंसर्स ऑटोमेटिकली रॉन्ग होने लग जाएंगे. इसके लिए एक बेहतर टेक्निक ये होती है कि बिफोर गोइंग फॉर द क्वेश्चंस, मोस्टली हम लोग ये करते हैं क्वेश्चंस पढ़ते हैं. लेकिन मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर पैसेज 1 आप 45 मिनट्स में खत्म कर लेते हैं, दैट लीव्स यू विद 1 आवर फॉर पैसेज 2. तो पहले आराम से एक लंबी सांस लो सुकून से बैठ के पेपर में, एग्जामिनेशन में, एंड फर्स्ट जस्ट रीड द पैसेज केयरफुली. पूरा पैसेज पढ़ लो, पूरा पैसेज 2 पढ़ लो आराम से, ताकि तुम्हें सारी चीजों का आइडिया हो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में जल्दबाजी करके तुम गलती नहीं करोगे. ये आरोप तुम्हारे लिए खास तौर पे बात है, बिकॉज आई नो यू, बिकॉज आई टीच यू पर्सनली, दैट्स व्हाई आई नो दैट. तो इफ यू आर डूइंग दैट थिंग, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू बेटे, क्योंकि जब पैसेज पढ़ लोगे तो पूरा ओवरऑल आइडिया हो जाएगा. वरना बिकॉज लाइक अरूप, यू आर अ गुड स्टूडेंट, बट समटाइम्स यू डू मिस्टेक्स. व्हाई? बिकॉज यू आर इन हरी व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस, व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द क्वेश्चंस डायरेक्टली, अपनी जल्दबाजी को थोड़ा सा स्लो करने का तरीका ये है कि पहले पूरा पैसेज पढ़ लो एंड यू गो फॉर द क्वेश्चंस. वन वर्ड वाले क्वेश्चन के लिए बस ये याद रखना कि वन वर्ड वाला मींस वन वर्ड. उसमें आप 2 वर्ड्स नहीं लिखेंगे, कोई फ्रेज नहीं होगा उसमें. इवन कोई ऐसा भी नहीं लिख सकते कि आपने आंसर किया कि जी द वन वर्ड इज दिस, ये भी नहीं कर सकते. वन वर्ड मींस वन वर्ड आंसर, दैट्स इट. यस जासिब, दैट वुड बी बेनिफिशियल अगर सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हो. ओके स्टार, आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट आल्सो.
First, Rohil, this is inferential question. Inferential questions are the questions which need you to go in depth in the passage, read between the lines, and analyze the question and extract it out. That's it. You have to analyze the question and then extract it. Verbatim lift ups, Amal can obviously deduct the marks, a lot of marks. Okay, Abdullah, Tariq. Abdullah, very easy technique is there और teachers mostly students को समझाते हैं ये technique कि अगर किसी word की meaning नहीं पता तो passage में जाके context पढ़ो, थोड़ा सा आगे पीछे से meaning का idea जरूर हो जाता है उससे. सारे आंसर्स थर्ड में ही होंगे बेटे हम ना. Kalpana, yes, that is also fine if you do that. Daniel says, thank you, Arup. Aisha is done. 9 में बेटे कैसे करोगे कॉपी जब क्वेश्चन ही इन्फ्रेंशियल है आयशा. इन्फ्रेंशियल में तो कॉपी कर नहीं सकते ना बेटे. दानियल कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितना जल्दी पढ़ लोगे उतना अच्छा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. बच्चों ने ऐसे बहुत सारे सवाल बना के ना अपनी तरफ से अपने आप को परेशान किया हुआ है. और ये बात मैंने लास्ट वर्कशॉप में भी मेंशन की थी कि हमारे अपने सवाल अपनी कंफ्यूजन ने हमें ज्यादा डराया हुआ है rather than the पेपर. हमारा पेपर की प्रिपरेशन का मसला कम होता है, डर का मसला ज्यादा होता है. ओके योगेश, थैंक यू. ओके, मीनिंग इफेक्ट, यस वी आर going towards that, Ahmed. ध्यान we cannot explain it now. हम सीक्वेंस में चल रहे हैं ना बेटे, तो सीक्वेंस से करते हुए जाएंगे. ओके, so I'm reading the question that is taking a bit long here. What should we do in this situation if we don't know meaning of a word but we think that it may be the answer? You have to take your chances then. Aslan, Aisha, obviously it's not written, लेकिन आपको language of the question से पता चल रहा है कि this is a inferential question. Okay बेटे, ये तो थोड़ा सा हमें आइडिया लगाना पड़ता है ना, क्योंकि पैसेज को हमेशा से डिफिकल्ट होता है. Okay guys, son, we are going towards that. Okay, moving forward. We don't have much time. बहुत सारा काम और है बेटे, so that's why moving forward. Just taking the last question here, and then I'll move forward. Krishna says, Krishna, we don't have time for these things here, please. Hashim is saying, sir, अगर ये 9 सवाल में passage आंसर हो, हाँ अगर passage में है तो obviously go for it. Hashim, no issues. Okay, enough for the questions here. We are moving forward. Only 20 minutes left, and 20 minutes is not enough for the ECRs and the other key messages. फिर वही होगा, ECR हमारा रह जाएगा बेटे. Okay, इसमें there are 4 options mostly, and you have to choose one. अच्छी टेक्निक ये होती है कि line is already given to you here. The line number is given. Go to that line और उस line number पे जाके वो word ढूंढो. The word is occasionally. Fit every word there and see कि वो कौन सा word fit in हो रहा है. Shortly को fit करके देखो, soon को fit करके देख लो, surely को देख लो, sometimes को देख लो. एक टेक्निक ये होती है. जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा एक ही टेक्निक फॉलो करे. कुछ बच्चे कुछ और टेक्निक से फॉलो कर सकते हैं. Okay, enough for the chat. Please come here. Now in that case, sometimes होता ये है occasionally. अब जैसे ये बात important point है that I should tell you guys कि sometimes ये जो नीचे options आपको दिए हुए होते हैं इन 4 options में एक आंसर बिल्कुल irrelevant आंसर होता है, तो पहले वो ढूंढ लो, उसको बाहर निकाल दो. ये टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, ये कहलाती है आपकी टेक्निक ऑफ POE. This is called technique of POE, process of elimination. When you cannot find the right answer, you go for the wrong one and eliminate that. For example, अब जैसे soon is total irrelevant answer to occasionally. Occasionally का soon से कोई link बनता नहीं है, so that is obviously an irrelevant answer. Shortly एक और irrelevant answer है हमारे पास, यानी कि इसने 2 irrelevant answer दिए. वरना mostly होता है कि एक irrelevant होता है,
एक आंसर उसका एंटोनियम होता है, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता ऐसा, और एक आंसर उसका मीनिंग होगा और एक और आंसर उसकी मीनिंग होगा, लेकिन एक मीनिंग आपकी लिटरल होगी, एक मीनिंग कॉन्टेक्चुअल होगी। यू हैव टू गो ऑन द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। अब जैसे ओकेजनली श्योरली भी रिलेवेंट आंसर है, समटाइम्स इज द बेस्ट आंसर है। आई हैवंट रेड द पैसेज, मैंने पैसेज भी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर पीओई लगाकर सॉल्व कर लिया। वी कैन डू दैट टू, और यही आंसर मेरे ख्याल में राइट आंसर होगा। बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक ई, कन्विक्शन। अब कन्विक्शन लाइन 40, ये वर्ड भी मुश्किल है और इसके आंसर्स भी मैं थोड़े से वैरी कर रहे हैं आपस में, आपके ऑप्शंस, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट गाइस। अब देखो इसमें एक होप है, एक सर्टेनिटी है, ट्रस्ट है और कन्फेशन है। नाउ कन्फेशन वो इररिलेवेंट आंसर जिसकी बात कर रहा था, कन्फेशन का कन्विक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, देयर इज नो कनेक्शन। अब इसको आप चाहो तो पुट अप करके देख लो वहां पर पैसेज पे, वरना वैसे ही चेक कर लो। अब नाउ वी लेफ्ट विद सर्टेनिटी, ट्रस्ट एंड होप। अब इसमें दो ऐसे हैं जो इसकी मीनिंग है, बट एक लिटरल मीनिंग है, एक कंटेक्चुअल मीनिंग है। फॉर एग्जांपल सर्टेनिटी वुड बी अ कंटेक्चुअल मीनिंग, ट्रस्ट इज लिटरल मीनिंग, एंड होप इज अनदर irrelevant आंसर। सो अब इन दो मीनिंग्स को मैं पैसेज पे लगा के चेक करूंगा कि सर्टेनिटी ज्यादा सूट कर रही है वहां पर या ट्रस्ट ज्यादा सूट कर रहा है, एंड व्हाटएवर सूट्स पैसेज आई विल गो फॉर द आंसर एंड आई विल टेक द आंसर। क्लियर? Is it okay guys? Okay, wait, I'm reading the questions here. कृष्णा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना बेटे, ये तरीका से सॉल्व करने का। इस तरह no, it's not the original meaning. We have to go to the contextual meaning, the meaning that is used in the passage, not the meaning that is actually the word has. Yes, Samita, I have done prior two questions here. Okay, now wait, let me read the questions here. Yes, Asnan, we are moving towards writer craft, and you guys have to do the ECRs by yourself again, because होता यही है कि most of the times questions इतने ज़्यादा हो जाते हैं that we don't have time to go for the whole things that I've planned. Okay, moving forward. We are not going towards the answer. हम आंसर से बात नहीं करेंगे, पहले हम इसके अंडरस्टैंडिंग देखेंगे बेटे, then we'll go for the answers. Okay, now just hold your questions a bit. I'm moving forward. Writer's craft. Writer's craft is basically for the appreciation of the words and phrases used by the writer. So basically writer's craft एक appreciative work होता है कि जो writer ने passage में words use किए हैं, how we appreciate those words and how the writer has produced effects with those words. अगर आपको एक एग्जांपल याद हो from the passage Emma, everybody, I'm talking to everybody, passage Emma से अगर एक एग्जांपल याद हो कि there was an example, the door of Emma's parents' bedroom creaked open, and creaked open means it opened by making a slight noise, and अब उसका हमें इफेक्ट बताना था। अच्छा, मीनिंग तो क्वाइट सिंपल, मोस्टली स्टूडेंट्स मीनिंग बता लेते, प्रॉब्लम होती नहीं है। मीनिंग में बस याद ये रखना कि मीनिंग कंटेक्सचुअल हो, मीनिंग आपकी मर्जी की नहीं हो, मीनिंग पैसेज की मर्जी की हो, ये याद रखना। फर्स्ट थिंग इज दैट बच्चा, ठीक है। दूसरी बात, मीनिंग बताने के बाद मीनिंग में प्रॉब्लम होती नहीं है स्टूडेंट्स को इतना यूजली, और अगर किसी को हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं मीनिंग के बारे में, आई लेट यू नो। लेकिन मीनिंग आर जस्ट द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश टू इंग्लिश ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज को सामने रख के फिर मीनिंग की बात करनी है। इफेक्ट के अंदर ये बताना है कि वो पढ़ने के बाद आपके रीडर पर क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, व्हाट इफेक्ट, यस, व्हाट इफेक्ट द रीडर इज हैविंग बाय रीडिंग दोज लाइंस।
जैसे अगर मैं एमा वाले पैसेज की बात करूं कि दैट बेडरूम डोर क्रीक्ड ओपन, तो मैं ये एग्जांपल हमेशा स्टूडेंट्स को देता हूं, इवन इन द वर्कशॉप्स टू हैव गिवन दिस एग्जांपल, कि अब अगर आप जरा सोचें कि यू आर वाचिंग अ मूवी और अगर उसमें एक दरवाजा क्रीक्ड ओपन हो रहा है आहिस्ता से, बाय मेकिंग अ स्लाइट नॉइज वो दरवाजा खुल रहा है, तो ये क्रीक्ड ओपन इज इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री टू द ऑडियंस, to the viewers if it is a movie. Same goes for the reading passage. Reading में भी यही होता है. अब इसका इफेक्ट यही होगा दरवाजा खुलने का कि the bedroom door creaked open का मतलब है कि it's giving a sense of, अच्छा हमेशा इसको इसी तरह आंसर करोगे तो बेटर रहेगा इफेक्ट को, कि it's giving the sense of, या it's conveying the sense of horror and mystery to the audience, to the reader. इस तरह करके इस लैंग्वेज में इफेक्ट को आंसर करना है, ये इसका राइट वे है आंसर करने का बेटे. ओके, मीनिंग इज द कंटेक्चुअल मीनिंग, जो पैसेज में पूछ आई है, मीनिंग जो पैसेज सपोर्ट करता है वो मीनिंग लिखनी है, नॉट द लिटिल मीनिंग. इफेक्ट के अंदर आपने ये देखना है कि व्हाई द राइटर हैज यूज्ड दोस पर्टिकुलर वर्ड्स एंड व्हाट इफेक्ट दोस वर्ड्स आर हैविंग ऑन द रीडर. फॉर एग्जांपल निजाम के पैसेज में राइटर ने लिखा कि थी निजाम शॉट आउट ऑफ द कैफे. निजाम शॉट आउट ऑफ द कैफे. Now shot out means he ran, वो भागा. So simple meaning में आ गया जी, he ran away from the passage. लेकिन meaning में क्या होगा? What meaning we are having? Meaning हो गई. Now going for the effect. अब इसका effect क्या होगा? ठीक है जी, निजाम ran from the cafe, निजाम भागा कैफे से, ठीक है. But what effect it's creating on the reader? क्योंकि भाई शॉर्ट की जगह अगर शॉर्ट की मीनिंग रन है तो शॉर्ट के इंस्टेड आपका राइटर रन वर्ड भी तो यूज कर सकता था, इसने शॉर्ट वर्ड ही क्यों यूज किया? इट मींस अब ये सारी एनालिसिस है, ये एनालिसिस, ये पूरी इंटरप्रिटेशन, दिस शुड गोज ऑन इन योर माइंड व्हेन यू आर डूइंग द पेपर, द क्वेश्चन हियर इन द पेपर. ओके, अब ऑब्वियसली द निजाम वाज इन हरी टू कैच द थीफ. दिस इज द इफेक्ट इट्स क्रिएटिंग. अगर तुम इसके बजाय निजाम बॉस हरी के बजाय अगर ये भी लिख दोगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट, अगर तुम ये लिखो कि इट इज क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ हरीडनेस ऑन द रीडर्स माइंड, तो दिस वुड बी कास्टेड एज अ मोर बेटर क्वेश्चन, मोर बेटर आंसर. ओके, सो अब हमें ये एनालाइज करना पड़ता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग रन, व्हाई द राइटर हैज यूज्ड द वर्ड शॉट. दिस इज वन ऑफ द रीजन टू क्रिएट an effect, create a dramatic effect of running. Okay, अब obviously Ruhil, why we say that Nizam is Nizam was angry की कहीं बात ही नहीं आ रही है. Exactly Raza, very good, very nice. Okay, I'm reading the questions here. Kalpana, to pot the thief, to catch the thief जो है ना, ये this is not the effect being created. ये मैं बताता हूँ क्यों. Okay, let me read the question here. Okay. Bete, I don't understand when the student says, can you repeat? Because I have explained everything. Yeah, now you're saying to repeat it again. This is a very difficult task for a teacher. We have to connect the dots for repeating anything. So try to be focused once, okay? Try to be focused because we don't have time for repeating it. Anyone wants to repeat this, we can talk individually for that, because we don't have much time here. Okay. Arup, please focus on the thing we are doing here. Focus on the thing. You know, Nizam was not a chat. Okay. Hashim, I've explained the meaning. I've explained the meaning in effect both. Yes, Noor, we can write that. Now see the passage that I have sent. The passage that I have sent. Okay. Now, this is the line we have been given. लेकिन पहले इन पर डायरेक्ट जाने से बेहतर ये है, instead of going directly to these solutions, first read this. Read paragraph. Read here.
Reread paragraph 5 and 6, which contain phrases about A, Mr. Waldo's behavior, and B, Mr. Waldo's words. So this is about Mr. Waldo's behavior, and this line is about Mr. Waldo's words. So means we have to focus on Mr. Waldo's behavior and words, not anything else, not on the students, not on Kevin, not on anybody else. We have to base the answer on Mr. Waldo. तो बेटे ये देख लो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स, आई हैवंट सीन स्टूडेंट्स रीडिंग दीस पार्ट्स, आई हैवंट माई सेल्फ सीन स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स जो ये पार्ट्स पढ़ते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स इनको स्किप कर देते हैं. Okay, now see the meaning of each phrase and as it is used in the passage, जैसा मैंने आपको समझाया बेटे, and effect of each phrase as it is used in the passage. As it is used in the passage, this is the word it's using again and again. It means कि ये important part है बेटे. Okay, now moving forward. The sweeping hand gesture brought the students quickly to their feet. The sweeping hand gesture and quickly to their feet. These are only two things that need to be explained when I'm explaining the meaning. So ये दो words बताने पड़ेंगे जब मैं meaning explain करूँगा. Okay, where we only have little time left, we are moving forward. Now sweeping hand gesture and quickly to the field, इसकी meaning explain की. Okay, obviously when Mr. Waldo entered, क्योंकि मुझे Waldo का behavior बताना है, तो I'll be only discussing Mr. Waldo. When Mr. Waldo entered, so he just asked, when he showed his hands, when he symbolized, or when he, hello, okay, yes, okay, I'm doing that. Okay, there was a question in the chat. When Mr. Waldo entered the class and he varied and he instructed everybody in the class, so everybody stood up. ये हो गई meaning. Effect ये होगा कि that Mr. Waldo has good control over the class. Good control over the class. This would be the effect. Now see, a shop, Mr. Waldo mimicked. Now here we need to focus on the words of Mr. Waldo as said by the question. जैसे question ने कहा है, a shop, Mr. Waldo mimicked. Line 48. So simple ये होगा कि Mr. Waldo repeated the words said by Kevin in a mocked way. In a mocked way, that is done. Meaning हो गई. Effect. What effect it's creating? I'll leave that to the ECR because I'm moving towards the ECR now. But first, read the examiner detail here. We don't have much time. Obviously, this is giving a sense of sarcastically, but I'm leaving it to ECR because ECR would just detail it in a more better way. Yeah, we have to do that. ECR में भेज दूंगा. You guys can go through that because we don't have much time. Okay, here with frequent reading discussion of variety of fiction, all students would benefit greatly in terms of answering the question and in section and enjoying even more fully the books they read more widely. Okay, because we don't have much time, इसलिए मैं ज़्यादा stay नहीं कर पा रहा हूँ. Meaning in effect पे किसी को issue हो ज़्यादा issue हो या अभी issue हो रहा हो, so he can directly ask me later. I have already told you my number. Everybody knows my number, so that's not an issue. Generally, responding to a detailed demands the question of the second passage and proved more challenging than those in the first, more factual text. These demands, as mentioned in general comments above, are very different from those targeted in section 1. Fostering candidates' personal enjoyment of reading fiction as well as group reading and discussion of other books could help them tackle the type of questions encountered in this section. That means कि थोड़ी सी reading habit अगर ज़्यादा होगी तो बेहतर रहेगा. Section 2, understanding of both literal and differential meaning is required. Some candidates found that responding to detailed demands of the question on the second passage was challenging. जब थोड़ा सा क्वेश्चन को डिटेल करना पड़ता है या जहाँ पे क्वेश्चन डिमांड करता है डिटेल की, वहां पर मुश्किल आता है. Question number 8, multiple choice question. All of the words which candidate must choose may be suitable in certain situations, but there is one which is suitable. ये वही बात है जो मैंने बताई है. You can read it on. आप पढ़ सकते हैं. Same बात है. Candidates should be encouraged to try out each word and decide. Okay. In responding to the final question of section 2, candidates are advised to clear in their minds the difference between literal meaning and the effect suggested by quoted sentence.
as used in the passage. Giving the meaning is often simpler. The candidates expect in feeling that they should extend the responses to the first part. They sometimes include what amounts to be to the effect the two should be kept separate as a gainful credit. Simply बात यहाँ पर एग्जामिनर ये कर रहा है कि स्टूडेंट्स ये करते हैं कभी कभार गलती मिस्टेक ये करते हैं कि वो मीनिंग बताते वक्त while explaining the meaning इतना डिटेल हो जाते हैं कि इफेक्ट भी वो मीनिंग में इंक्लूड कर देते हैं. So you need to keep the meaning and effect things separate. प्रॉब्लम यहीं पे होगी. Now this is the ECR. Asad, okay, Malik Asad will be doing that. It's fine. Will obviously answer to all the queries that are very important, very urgent, and there are so many queries are coming, so that's why sometimes it's not possible for me to answer each and everybody in the world. Okay. Moving forward, this is the ECR. Only 1 minute left here. I can do one favor, and that is I can give 10 to 15 more minutes ताकि मैं थोड़े से आपको समझा सकूं ECR के कुछ थोड़े बहुत कमेंट्स. तो इसके लिए मैं 10-15 मिनट आपको और दे सकता हूं if you guys can join again. Give a thumb up if you can join. Okay, I'm starting it again. Just join. I'm starting it again. Okay, I'll be giving 10 to more 15 minutes, 10 to 15 minutes more. Just join again. We don't have much time.